अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरे ख्याल से हमें स्टार्ट करना चाहिए अभी। अब जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने बियर्स कैटेगरी थ्योरम प्रूव करी थी। इनफैक्ट वी प्रूव्ड अ मोर जनरल स्टेटमेंट। मैंने आपको दिखाया था एवरी कंप्लीट स्पेस इज अ बियर स्पेस, ठीक। एंड देन ऑन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इज दैट एवरी कंप्लीट स्पेस इज ऑफ सेकंड कैटेगरी, ठीक। अभी क्या करेंगे, विल लुक एट सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस बियर्स कैटेगरी थ्योरम, बट बिफोर दैट मैं आपको बताऊंगा व्हाट वी मीन by a function to be continuous in a metric space, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा है what we mean by a sequence to converge in a metric space। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हम ये टोपोलॉजी पढ़ते हैं ना, the main idea is to provide a mathematical framework where we can discuss about convergence of sequences and continuity of functions, जहाँ आप इन चीज़ों के बारे में where these things make sense actually। अब ये डिफाइन करने के लिए मतलब ना, ये what we mean by continuity of a function acting between two metric spaces, I require certain notations और कुछ चीजें भी मुझे चाहिए। पहले हम उन्हीं को देख लेते हैं। आप ये देखिए, consider a mapping f from x into y where x and y are some non-empty। अब दो non-empty sets consider करिए x and y, and then consider a mapping acting between x and y, full stop। Now this mapping, it induces, अगर आप इस मैपिंग को देखेंगे ना, this mapping is x between x to y, this mapping gives rise to two other mappings, two set mappings। Actually any function from x into y, it gives rise to two set functions, one which goes from power set of x into power set of y। आप समझ रहे हैं मेरी बात? If you have a mapping between a set x, between a non-empty set x and a non-empty set y, then this mapping, it gives rise to two other mappings, it leads to two other mappings। One, और वो जो mappings होंगी, they will be set mappings, that means they will be mapping sets to sets। Now the first of these set mappings goes from power set of x into power set of y, and the other goes from power set of y into power set of x। आप ये लिखिए। Every such mapping gives rise to two important set mappings, one which goes from power set of x to power set of y, and the other which goes from power set of y into power set of x।
अब ये जो मैपिंग है ना विच गोज फ्रॉम पावर सेट ऑफ x इनटू पावर सेट ऑफ y, इस मैपिंग को f से ही हम डिनोट करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट इमेज फंक्शन। और मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ ये हम व्हाट इज द रूल ऑफ दिस मैपिंग वेयर f of a is equal f of little a such that qualifier ये है such that little a varies over capital A. This is how this f at a this is how this mapping works. This is the rule for this mapping. ये जो मैं ऊपर यहाँ भी mapping mention कर रहा हूँ ना, the rule for this mapping is this. And this is true for all a's in the power set of x. So this is how this mapping, मैंने आपसे कहा ना कि any mapping from a non-empty set x into a non-empty set y gives rise to two important set mappings. The first of these set mappings is this, which goes from power set of x into power set of y. And this mapping is called the direct image function. But यहाँ ये है कि we use the same symbol for this. We use the same symbol f for this direct image function. Now the question is हमें समझ कैसे आएगा whether we are speaking about the mapping f or the direct image function. ये direct image function है ना, it's a completely different object. f is a mapping from, आप देखिए जो f है it's a mapping from x into y, whereas this function जिसको हम f से ही denote कर रहे हैं it's a function from p of x into p of y. So that means as a function it's a totally different function, but we are using the same symbol. So therefore there is a chance of confusion. मतलब हमें समझ कैसे आएगा कि हम किस फंक्शन की बात करेंगे कर रहे हैं whether we are मतलब यहाँ सपोज आप देख रहे हैं लिखे हुए है वहाँ f, ठीक। Now the question is हम किस फंक्शन की बात कर रहे हैं? Are we speaking of the function which x between x to which takes x into y, or are we speaking of this function which takes p of x into p of y? The answer to this, ये जो है ना ये चीज एक मतलब हम किस वाले मैपिंग की बात कर रहे हैं it becomes clear जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ जो मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ ना f of it's a square bracket, तो जब भी आप इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे ना आपको समझना है कि that we are speaking of the direct image function. It's not the function f which goes from x into y, it's actually the function f which goes from power set of x into power set of y. Now for example, suppose f is like this. Suppose this is your x, x1, x2, x3, और मान लीजिए this is y, where y is y1, y2, y3, y4, ठीक। और मान लीजिए मैपिंग f it's like this, because it takes x1 to y1, x2 to y again y1, and x3 to y2, because this is the action of f. Now if we take as a in power set of x, let's take a to be this set x2, x3. Now in order to compute f of a direct image function at this subset a, आपको क्या करना है actually? आपको देखिए definition is this, f of a is this, you need to compute f. Which f? यहाँ आप देखिए I am using the round brackets, so that means it's the function which takes x into y. तो आपको उसी function को compute करना है। कहाँ compute करना है? You have to compute the function at each point of a. तो अगर आप यहाँ देखेंगे what will be this f of a? This will be f of x2, because a में जो points है वो है x2 and x3, so you need to compute f at x2 and f at x3. अब देखिए what's f at x2? It's y1. What's f at x3? It's y2. So the image of a under this direct image function is this set. Function f, it takes this set onto this set.
ठीक. So this is how we compute the direct image function. It goes from p of x into p of y. मैंने starting में ही आपसे कहा था there are two set functions. Now the other set function, it goes from p of y, the power set of y, into power set of x. The second set mapping है ना यहाँ पर, it goes from the power set of y into the power set of x. ठीक. अब इसके लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे इस मैपिंग के लिए, the set mapping which goes from p of y into p of x, इसके लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे वो ये होगा, f raise minus 1. यहाँ एक चीज याद रखिएगा, इस चीज को नोट करिएगा, this has nothing to do with f inverse. मतलब I'm not saying that f is invertible. This is just a symbol. I'm not saying that f is invertible. When I write f inverse, I'm not saying f is invertible. It's simply a symbol. Now the question is how this function works. इसका रूल क्या है वो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ. Where f, यहाँ भी हम क्या करेंगे, to differentiate or to distinguish this set mapping which goes from p of y into p of x, to distinguish this set mapping from the inverse of f whenever the inverse exists, we'll use this square brackets. हम square brackets का इस्तेमाल करेंगे to differentiate this set mapping from f inverse whenever f inverse exists. Because यहाँ भी वही खतरा है ना, अगर f inverse exist कर रहा है तो आपको फिर एक confusion है कि आप since you are using the same symbol, तो एक naturally फिर यहाँ एक chance of confusion है कि अगर आप f inverse लिख रहे हैं तो आपको पहले ensure करना, मतलब जो पढ़ने वाला है तो उसको ना ये उसके लिए क्लियर होना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, और आप f इनवर्स की बात कर रहे हैं या आप इस सेट मैपिंग की बात कर रहे हैं. और इस चीज को भी, ये जो कंफ्यूजन है इसको खत्म करने के लिए विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स. सो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स देखते हैं तो आपको समझना है इट्स एक्चुअली द सेट मैपिंग व्हिच गोस फ्रॉम p of y into p of x. अब ये जो सेट मैपिंग है इट्स कॉल्ड द इनवर्स इमेज फंक्शन. f ऊपर वाली सेट मैपिंग को हमने कहा था डायरेक्ट इमेज फंक्शन, इसको हम कहेंगे इनवर्स इमेज फंक्शन. अब ये काम कैसे करती है ये इनवर्स इमेज फंक्शन? इट वर्क्स लाइक दिस. द रूल इज दिस, f is minus 1 when evaluated at b, this is equal, ये अच्छे से देख लीजिएगा इसको, it is equal all those x's in x and the qualifier is, देखिए this is f जो है ना, this mapping f is minus 1, it takes p of y into p of x, right? So that means if you take a subset b of y, that means if you take an element in p of y, इसकी जो image है under this, it has to be a subset of x, because the mapping goes from p of y into p of x. So the image has to be a subset of x. अब ये कौन सा subset है वही मैं आपको बता रहा हूँ. It's actually this set of those elements in x and the qualifier is this, such that f of x is in b. That means you have to identify all those elements in x whose image, which image, ये कौन सी image है यहाँ पर? This is the image of x under the function which goes from x into y, because we are using round brackets. So you have, in order to compute f inverse b, you have to actually identify all those elements in x whose image is in b. This is how we compute this inverse image function. For example, अगर आप एक example इसके लिए लेंगे, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस पर आप ये f inverse अप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ f raised minus 1 जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, it's b. What's b? b is a subset of y because it's a member of p of y. So this is a subset of y. And what is this? This is a subset of x. So this mapping, it transforms subsets of y into subsets of x. ठीक. Whereas the above set mapping, अगर आप उसे देखेंगे, what is this a here? This a is a subset of x. It's a subset of x. अब इसकी जो image है under this direct image function, it is this. It's f of a, where a varies over capital A. What's f of a? F of a will be an element of y. So that means this is a subset of y.
because f is a mapping from x into y, so f of a, this will be an element of y. So this is composed of elements of y, so it's a subset of y. So this direct image function, it transforms subsets of sorry, not, पता नहीं क्या लिखा है. This is a subset of x. A is an element of p of x, so means it's a subset of x. और ये जो डायरेक्ट इमेज फंक्शन है, ये क्या करता है, it transforms this subset of x into a subset of y. हम सर नीचे, स्क्रीन बहुत लेट लोड हो रही है मैं सर. इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने स्ट्रीमिंग भी इसी के लिए करी. आपको अपने एंड पर प्रॉब्लम होगी, मैं आपको एक दफा स्पीड भी दिखा रहा सर हूँ. मुझे भी नहीं आ रही है, मेरा यहाँ से आप ठीक एक है. काम मैंने करिए, तो कन्फर्म जो किया आपके 2 पास, 2 मतलब ये जो आप पैक्स है ना आपके, उसको एक दफा नजर दीजिएगा, क्योंकि मतलब यहाँ से मेरे एंड से अब कोई मसला नहीं है. उसके लिए आई एम सर्टन, मतलब मैं उसमें तो मुझे पूरा पता है कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपको एक दफा स्पीड दिखा रहा हूँ. और वहां से मेरी स्ट्रीमिंग भी चल रही है, फिर भी स्पीड ठीक ठाक है, तो आप खुद समझ सकते हैं. तो यहाँ से तो कोई मसला नहीं है. आप ऐसी जगह बैठा करें जहां आपको ठीक ठाक नेटवर्क आ रही है. आप वो आइडेंटिफाई करिए वो प्लेस जहां नेटवर्क ठीक है, तो होपफुली ये प्रॉब्लम नहीं होगी. हाँ, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा, ये मतलब ये कैसे काम करता है. एज एन एग्जांपल हम इसको देखेंगे. डेफिनेशन मैंने आपको दिखाई, तो आप विल illustrate the action of this inverse image function with an example. Let's take two sets x and y. Suppose x is x1, x2, x3, x4. And suppose y is y1, y2, y3, y4. And suppose there is a mapping f which takes x into y, and the mapping works like this. It takes x, point x1 onto point y1, takes the point x2 onto the point y2, takes the point x3 onto the point y4, and the point x4 onto the point y3. Suppose this is our mapping f. अब क्या हम करेंगे यहाँ पर, I'll take a b where b is going to be a subset of y. Let's suppose b is equal to y1, y3, y4. Now let's compute f raised minus 1 of b. Let's evaluate the inverse image function at b. This is going to be equal, आपको क्या करना है, you have to identify all those elements in your domain whose image is in B. So in the first place, it's this set. It's the set of all those x's in capital X such that the image is in B. अब करिए आइडेंटिफाई कौन कौन सा पॉइंट है इस कैपिटल X में whose image is in B. अगर आप x1 को देखेंगे, x1 की जो इमेज है it's y1 and y1 is in B, so x1 आएगा इस सेट में because इसकी जो इमेज है it's in B. x2 को देखिए, x2 की जो इमेज है it's y2, y2 is not in B, तो x2 इसका मेंबर नहीं होगा. अब आइए x3 पर, x3 की जो इमेज है ना it's y4, y4 is an element of B, so the image of x3 is in B, so x3 will be in this set. And finally इसमें एक और एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट ये है x4, because अगर आप x4 की इमेज देखेंगे it's y3 and y3 is again a member of B. So इसके जो elements है इस inverse image function evaluated at B, it's this set. It's x1, x2, x4.
एक और एग्जांपल लीजिए इसकी, एक और इलस्ट्रेशन। सपोज x is this, x1, x2, x3, x4. Suppose y is y1, y2, y3, y4. Suppose there is a mapping which works like this. It takes x1 to y1, x2 again to y1, x3 to y2, and x4 to y2. So the function works like this. Suppose this is mapping f. Now let's take a subset b equal y3, y4. I'm taking a subset b of y, and let's compute the inverse image function associated with f at this b. That means let's compute this. Scatter brackets इस्तेमाल करने हैं आपको, because we are going to use the set mapping. Now what will be this? It will be, because we know that by definition it's actually the set of those x's and x whose image is in b. बताइए अभी इस केस में what will be this set? Identify all those elements in x whose image is in b. Is there any element in x whose image is in b? No, sir. कोई element नहीं है. So in this case the set will be empty set. So this is equal to phi in this case. अब ये देखिए, अब हमें पता है कि ये जो है ना, this inverse image function, it acts between, or it takes p of y into p of x. So इसका जो domain है it's p of y. Now y जो है ना, y, because y is also a subset of y, so you can see this y as an element of p of y, है ना. आप इसको p of y का element भी देख सकते हैं, because y is also a subset of y, so y is an element of p of y. Now if I ask you what is the inverse image function, this evaluated at y, what will be this? इसके लिए क्या करना है आपको? You have to identify all those elements in x, and the qualifier is this, such that f of x is in y. Now what is f? F is a mapping from x into y. So that means take any element in capital X, इसकी जो image है it's going to be in y. So that means this qualifier, it will be satisfied by every element of capital X. So what will be this set then? X. It will be the whole X. So inverse image function evaluated at y, अगर आप y को देखेंगे ना, it's the largest in some sense. Y is the largest element of p of y. आपको नहीं लग रहा है y is the largest element of p of y? Yes, sir. है ना, p of y में आ रहा है subsets of y, and y is the largest subset of y. इससे बड़ा और कोई सबसेट नहीं हो सकता y का. अब इन दिस केस अगर आप इस इनवर्स इमेज फंक्शन को अप्लाई करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे इसको एट लार्जेस्ट एलिमेंट, यू गेट द होल स्पेस x. ऑन द अदर हैंड अगर आप इसे देखेंगे, व्हाट अबाउट अगर आप यही चीज वहां करेंगे डायरेक्ट इमेज फंक्शन में, डायरेक्ट इमेज फंक्शन जो है ना, उसका जो डोमेन है इट्स p of x, दैट मींस द पावर सेट ऑफ x, and it takes power set of x into power set of y. Now what is the largest element of power set of x? It's x, है ना. Now if you evaluate the direct image function at x, क्या लग रहा है आपको? What will be this?
विल इट बी y? क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये y के बराबर होगा? ऑलवेज होगा ये y के बराबर? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं। लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कैपिटल X is x1, x2, x3. Suppose capital Y is y1, y2, y3. And suppose there is a mapping f which takes x1 to y1, x2 to y2, and x3 to y3. Now in this situation, अगर आप ये करेंगे, if you evaluate the direct image function f at x, in the first place this is equal, by definition this is equal f of x little x such that little x varies over capital X. So capital X में जितने भी elements हैं उन पर आपको f apply करना है, और and then you have to collect those images that the set of those images will be p of x. Now what will be p of x in this case? जब आप x1 पर अप्लाई करेंगे f, वहां से आपको y1 मिलेगा। जब आप x2 पर करेंगे वहां से y2 मिलेगा, बिकॉज यहाँ आपको कैसे इसको ऑब्टेन करना है सेट को, यू हैव टू इवैल्यूएट f एट x, एंड इस चीज को आपको करना है फॉर एवरी x इन कैपिटल X. तो आपको यहाँ से कैपिटल X से पॉइंट्स लेना है, उन पर f अप्लाई कर रहा है। जैसे आप ये करेंगे आपको y1 भी मिलेगा, y2 भी मिलेगा, y3 भी मिलेगा। सो इट विल बी y1, y2, y3, एंड दिस इज द होल y. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये वाली एग्जांपल लेंगे, अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे, आई एम टेकिंग द सेम सेट्स, x और y मैं सेम ले रहा हूँ, बट यहाँ थोड़ी सी मैं मैपिंग चेंज कर रहा हूँ. Suppose x1 is as before, suppose this x set x is x1, x2, x3, and suppose the set y is y1, y2, y3, and suppose the mapping works like this. There is a mapping f which works like this. It takes x1 to y1, x2 to y2, and x3 to y2. So in this case, if I ask you what is the direct image function associated with f evaluated at x, what will be this? इसमें खाली y1 और y2 आएगा, y3 नहीं आएगा इसमें, and this is not equal to capital Y. So in general, you should not expect that the direct image function evaluated at the largest element x is equal to the largest element of p of y. In general ऐसा नहीं होता. This is not true in general. अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा, what is the problem? अगर आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर वाली एग्जांपल में f of x is equal to y, यहाँ आया था ना? onto function onto. Exactly. The problem here is the function is not surjective. If the function is surjective, then f of x will be equal to y. So in general आप ये expect नहीं कर सकते, ये ना, ये वाली चीज in general आप इसको expect नहीं कर सकते. However, if your function is surjective, then this is also true. मैं आपको कुछ assignments दूंगा फिर related to these associated set mappings, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं. मुझे अभी जो चाहिए था वो हो गया. Now we can move along. आप सबसे पहले आप एक definition अब लिखिए. Neighborhood. Neighborhood of a point.
let xt be a metric space and little x be a point in capital X, comma, then any open set, containing X is called a neighborhood. It's called a neighborhood of X in the space xt. So this is what we mean by a neighborhood. It's simply an open set containing X. Neighborhood of X is simply an open set containing X. Now if I ask you, can you give me an example of a neighborhood of X? What is the simplest example of a neighborhood? Sorry? Open sphere. Exactly, open sphere. Every open sphere is a neighborhood. Because अगर आपको पता है open sphere centered at X, है ना? If you take X and then take any open sphere centered at that X, it will be open and it will contain X because X is the center. So therefore it's an open set containing X. So therefore by definition it's a neighborhood. Open sphere is an example of a neighborhood. But not every open, but यहाँ तो आप देख रहे थे oh, every open sphere centered at X is a neighborhood of X. So as a remark लिखिए नीचे. Every open sphere SRX centered at X is a neighborhood को हम ना short form में ऐसे लिखते हैं NBD is a neighborhood of X because this is open and it contains X, so therefore it's a neighborhood of X. However, इसका एक तरह से कहिए इसको जो converse है that's not true. यहाँ आप देख रहे हैं every open sphere centered at X is a neighborhood of X, but not every neighborhood of X is an open sphere. इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहाँ. अगर आप इस metric space में है, suppose you are in the metric space R with the usual metric, ठीक? Suppose you are in this. इसमें मैंने आपको दिखाया है what is this? If you are in this metric space, what will be the open sphere centered at X and radius R? In the metric space R with the usual metric. इसमें अगर आप open sphere लेंगे centered at X radius R, what is this? This is equal Open interval. open interval X minus R to X plus R. It's equal to this. ठीक? ये हमें पता है. अब ये देखिए आप. Let capital O be equal open interval 1 4 union the open interval 10 16. अगर आप इस O को देखेंगे in this metric space, since it's union of two open intervals, so therefore it's open because arbitrary union of open sets is open. Clearly this O is open. This is open. Also अगर आप देखेंगे, अगर आप point इसको देखेंगे say 14 को देखिए, 14 belongs to O. Now O is open and 14 belongs to O. It implies
अब देखिए, अगर आप इसे देखेंगे, since O is open and O contains 14 as an element, so therefore O is a neighborhood of 14. Clearly, capital O is a neighborhood of the point 14. But this O is not an open sphere. Why? Because जो open spheres होता है इस metric space में, they are open intervals, and this O is not an open interval. So that means not every neighborhood is, in general, not every neighborhood is an open sphere. There are neighborhoods जो open spheres नहीं है. O is a neighborhood of 14, but O is not an open sphere in metric space X. Sorry, in this case the metric spaces are with the use of metric. This is an example जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि that not every neighborhood is an open sphere. बस यहाँ जो O है, it is a neighborhood, but O is not an open sphere. Okay? और जो मैं आपसे कहा था वो अभी इस एग्जाम्पल की मदद से, यानी यहाँ पहले हमने देखा था every open sphere is a neighborhood, but जो इसका converse है in some sense, that is not true in general, and this is an example. Now I'll define what we mean by a function acting between two metric spaces be continuous. इसको आप हेडिंग में ऐसे लिखिए, continuity functions acting between two metric spaces. Let x, d and yd be two metric spaces. And suppose f from x into y is a function. Full stop. पहले अगर मैं यहाँ if I ask you, क्या आप यहाँ कोई सरप्राइजिंग चीज देख रहे हैं? आप इस चीज को देखिए जो मैंने ये लिखा ना, let x d and y d be two metric spaces and suppose f from x into y is a function. मैट्रिक हमने सेम डिफाइन किया सर. नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है. और एक्चुअली वी आर आई एम यूजिंग जस्ट द सेम सिंबल फॉर द ट्रू मैट्रिक्स. हालांकि लिखने से ऐसे लग रहा है, मालूम पड़ता है कि एज इफ वी आर टेकिंग द सेम मैट्रिक, बट ये आपको समझना है कि दिस मैट्रिक एंड दिस मैट्रिक ये सेम नहीं है. वी आर सिंपली यूजिंग द सेम सिंबल फॉर दीज टू मैट्रिक्स. अब यहाँ भी एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये है कि व्हाट अबाउट द कंफ्यूजन्स, बिकॉज क्लियरली यहाँ जिस तरह की चीज हम कर रहे हैं ना, इससे कंफ्यूजन का खतरा रहता है. यहाँ पर यू आर यूजिंग द सेम सिंबल फॉर द metric of x and the metric of, you are actually denoting the metric of x and the metric of y by a same symbol. तो obviously अगर आप इसको लिख रहे हैं, फिर यहाँ एक खतरा रहता है कि जो इस चीज को पढ़ने वाला है उसमें वो इस चीज को ना कैसे समझ पाएगा कि आप किस वाली मेट्रिक की बात कर रहे हैं.
अगर आप D लिख रहे हैं, सिंस D स्टैंड्स फॉर द मेट्रिक ऑफ x एज वेल एज द मेट्रिक ऑफ y, तो जो पढ़ने वाला है उसको ये कैसे समझ आएगा कि आप किस मेट्रिक की बात कर रहे हैं? क्या आप मेट्रिक ऑफ x की बात कर रहे हैं या आप मेट्रिक ऑफ y की बात कर रहे हैं? ये पढ़ने वाले को कैसे समझ आएगा? So there is a chance of confusion, but fortunately every time this confusion it can be avoided if we appeal to the context. अगर आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को एड्रेस करेंगे ना, अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे इस चीज को, then the confusion is it it vanishes immediately. फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एक इलस्ट्रेशन आपको दे रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल सपोज इस एक्सप्रेशन को आप देखिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए आप, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सॉरी नॉट वाई, जोड़ लेंगे यहाँ, डी ऑफ, आप सिंपली इस एक्सप्रेशन को इसको फिलहाल देखिए एज एन एक्सप्रेशन, फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ के हम कॉन्टेक्स्ट को कैसे अपील करते हैं और वहां से हम कैसे ये कंक्लूड करते हैं कि आप किस मीट्रिक की बात कर रहे हैं. अब तो आप इसके लिए आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, डी ऑफ यू कॉमा वी इज इक्वल डी ऑफ एफ ऑफ यू कॉमा एफ ऑफ वी. अब इस एक्सप्रेशन को देखिए और मान लीजिए यहाँ u और v जो है ना, दे आर एलिमेंट्स ऑफ x. अगर आप यहाँ देखेंगे दोनों साइड से आप d यूज कर रहे हैं, d ऑफ u कॉमा v एंड d ऑफ f ऑफ u कॉमा f ऑफ v. नाउ द क्वेश्चन इज ये कौन सा d है और ये कौन सा d है, ये किस स्पेस की मेट्रिक है और ये किस स्पेस की मेट्रिक है. अगर आप यहाँ कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट से हमें समझ आता है यहाँ पर क्या, दैट u एंड v दे आर पॉइंट्स ऑफ व्हाट, दे आर पॉइंट्स ऑफ x. They are points of x means this d it must be, since आप यहाँ इस d को किस पर अप्लाई कर रहे हैं, u comma v पर, so this d must be the metric of x, must be the metric in x. तो ये तो आ गया लेफ्ट साइड पर, जो d है उसके बारे में अब हमें पूरा पता है कि that it is actually the metric in x. The question is what about the d appearing in the right side. अगर आप वहां देखेंगे ये d आपने यहाँ किस पर अप्लाई किया है, f of u f of v. What's f? F is a function from x into y, right? U and v, they are points of x. So what will be f of u and f of v? ये किसके points होंगे? Points of y. They must be points of y. So that means यहाँ ये जो d है इसको आप किस पर apply कर रहे हैं? We're applying this d on points of y. So this must be the metric in y. Yes. So this is how we avoid the confusion. इससे हमें एक थोड़ी सी कन्वीनियंस हासिल होती है. एक्चुअली अगर आप ऐसा नहीं करते ना, फिर आपको सपोज अगर आप 7-8 मीट्रिक स्पेसेस के साथ डील कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए आपके लिए कितनी डिफिकल्ट हो जाती है वो सिचुएशन. आपको हर एक मीट्रिक के लिए अलग से एक सिंबल असाइन करना था उसको. अगर आप 10-15 मीट्रिक स्पेसेस के साथ एक ही टाइम में डील कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए वो फिर कितना, मतलब ना, कितना वो हेडेक वाला काम बनता हो वहां फिर वो चीजें हैंडल करना. बट वी कैन, अब इस तरह से जब मैं ये, जैसा कि मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ ना, वी कैन यूज द सेम सिंबल फॉर दिस मैट्रिक्स. और यहाँ से फिर हमें एक कन्वीनियंस भी हासिल होती है, और वो कन्वीनियंस ये है कि हमें बहुत सारे सिंबल्स को लेके नहीं चलना है, जस्ट अ सिंगल सिंबल. और यहाँ जो कंफ्यूजन है वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं. हालांकि चांस है कंफ्यूजन का, लेकिन every time the confusion can be avoided if you address to the context. अगर आप context को थोड़ा सा देखेंगे, you can avoid the confusion, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया. So when I write xd and yd, it doesn't mean that there is a same metric on x and y. It simply means we are using the same symbol. Metrics different है, but we are using the same symbol. इसी तरह से हम एक और चीज करेंगे यहाँ, whenever we'll be dealing with more than one metric spaces, we'll suppose आपको इस तरह की सिचुएशन है, suppose you have two metric spaces xd and yd. Now let's take a point little x in capital X and a point little y in capital Y. Now the open sphere centered at x, we know that it is denoted by, so open sphere radius r and centered at x is denoted by srx. ठीक.
अब यहाँ आपके पास एक और मेट्रिक स्पेस है YD. Now suppose you are interested in the open sphere centered at Y and radius R. Now the question is आप उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? क्या आप उसके लिए यही सिंबल यूज करेंगे या कोई और डिफरेंट सिंबल यूज करेंगे? And it turns out that you can use the same symbol. The open sphere centered at Y and radius R, उसको भी आप SRY से ही डिनोट कर सकते हैं. Now यहाँ भी एक मसला हो जाता है फिर जब मैं ये लिखता हूँ और ये लिखता हूँ, ये सेम सिंबल है ना, ऑलमोस्ट सेम है ये. Now the question is आप किस वाली स्पेस के ओपन स्फीयर की बात कर रहे हैं, SRX और SRY? सिंबल तो सेम है. अब क्वेश्चन है कि आप किस वाली स्पेस के ओपन स्फीयर की बात कर रहे हैं, वो भी आप ना कॉन्टेक्स्ट से पता कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं SRX, जो सेंटर है वो कहाँ से आपने लिया है, सॉरी दिस इज कैपिटल X हियर, जो सेंटर है ना इस ओपन स्फीयर का, इट्स लिटिल x एंड लिटिल x इज अ पॉइंट ऑफ कैपिटल X, सो दिस मस्ट बी एन ओपन स्फीयर इन दिस स्पेस. सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे दिस ओपन स्फीयर, इसका जो सेंटर है इट्स Y. Now Y is a point of capital Y, so therefore it must be an open sphere in this metric space. So आप open spheres के लिए भी सेम सिंबल यूज कर सकते हैं. खैर फिलहाल आप यहाँ वापस आइए. मैंने यहाँ दो मेट्रिक स्पेसेस लिए XT and YT, और मैं मान रहा हूँ that there is a mapping which takes X into Y. Full stop. Now if little x is a point of capital X, then this function f is said to be continuous at this point little x if and only if this is the criteria for the function f to be continuous at this point. If and only if the criteria is this. मैं किसी और कलर से लिख रहा हूँ इस क्राइटेरिया. क्राइटेरिया ये है, फॉर एवरी neighborhood of, for every neighborhood say V, like I should write for each neighborhood, not for every. For each neighborhood capital V of f of x there exists a neighborhood W of x such that f of W is contained in V. This is the criteria for a function to be continuousity. F of W, it should be contained in V. अब यहाँ देखिए आप, मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ f of W. What is this f of W? आप ब्रैकेट्स देखिए, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, so that means it's actually the direct image function associated with f evaluated at W. अब ये डायरेक्ट इमेज फंक्शन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स सबसेट्स ऑफ x इनटू सबसेट्स ऑफ y. अगर आप W को देखेंगे, व्हाट्स W? W के बारे में क्या जानते हैं आप? इट्स अ नेबरहुड. नेबरहुड ऑफ व्हाट? इट्स अ नेबरहुड ऑफ x. When I say it's a neighborhood of x, so that means W में क्या क्या होगा फिर? This W, it will be, एक तो इसमें ये होगा, it will contain x, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें? It will be open.
because neighborhood means open and contains the element. W is a neighborhood of X, it means it contains X as an element and it must be open. Now the question is open कहाँ होगा, किस metric space में open होगा ये? Open in XD, है ना? Because it contains an element of X. Little x is an element of capital X, so it must be open in XD. इसी तरह से ये जो V है, V is a neighborhood of f of X, so it must contain f of X and it must be open in the metric space YD. Now the criteria is the direct image function of this W, it should be contained in V. Actually the criteria ये है, not just this, criteria is this, जिसको मैं पूरी यहाँ ये golden में लिख रहा हूँ. For every neighborhood V of f of X, कोई भी neighborhood आप लीजिए f of X का, उसके corresponding for each neighborhood of f of X, there should be a neighborhood of X such that the direct image function evaluated at the neighborhood of X is contained in the neighborhood of f of X. इसको अच्छे से ना इंटरप्रेट करिएगा आप, यार ये जो लिख रहे हैं ना यहाँ पर, this is actually the direct image function evaluated at the neighborhood W of X, and or for f to be continuous it should be contained in the neighborhood of X. अभी कितना टाइम है हमारे पास? ऑलमोस्ट 10 मिनट है. रिमार्क, अब जिस तरह से यहाँ मैं ये लिख रहा हूँ ना, वहाँ यहाँ से ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये कैसे कंटिन्यूटी इम्प्लाई कर रही है ये चीज़. ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ नीचे. अब उसके लिए आप ये रिमार्क देखिए. सपोज f is continuous at suppose f is continuous at x, तो फिर क्या होगा? बाय डेफिनेशन every neighborhood v of f of x, for each neighborhood of f of x there will be a neighborhood w of x such that f of w is contained in v. यही होगा ना फिर, because this is the requirement for f to be continuous at x. This is our definition. I'm assuming here that f is continuous at x, so that means इसके लिए ये फिर होता होगा for each neighborhood v of f of x there will be a neighborhood w of x such that this is contained in this. ये आप ध्यान से देखिएगा. अब आप क्या करिए, अब ये लीजिए, अब let epsilon greater than 0 be arbitrary, full stop. Epsilon मैं ले रहा हूँ positive, but selection is arbitrary. If that be the case, then अगर आप इसे देखेंगे s epsilon centered at f of x, अगर आप इसे देखेंगे this is a neighborhood of, किसका neighborhood है ये? It's a neighborhood of f of x, because open sphere centered at a point is actually a neighborhood of that point. So therefore, since it has centered f of x, so it's a neighborhood of f of x. Now you are assuming that f is continuous at x. So therefore, by the definition of continuity, for every neighborhood of f of x, there is a neighborhood of w. Oh, sorry, there is a neighborhood of x. Now this is a neighborhood of f of x. तो इसके corresponding भी एक neighborhood होना चाहिए ना x का. अच्छा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ आप क्या रहे ना, the requirement is this: for every neighborhood v of f of x, there should be a neighborhood w of x. अब यहाँ since आप assume कर रहे हैं f is continuous at x, so therefore वो वाली ये जो है ना, ये वाली चीज ये होती होगी फिर. For every neighborhood v of f of x, there will be a neighborhood w of x for which this thing happens. तो यहाँ भी ये होगा because we are assuming that f is continuous at x. आप इसको ऐसे लिखिएगा, then this is, इसको ऐसे लिखिएगा, then this
is a neighborhood of f of x. It's a neighborhood of f of x, and therefore comma by the definition of continuity क्या होगा फिर we can find a neighborhood, say w of x, such that f of w is contained in s sub epsilon f of x. That means it's contained in the ये है ना requirement, f of w should be contained in v. यहाँ v की जगह है ये open sphere, so f of w will be contained in this open sphere centered at f of x and radius epsilon. ठीक, तो ये होगा full stop. अब एक और चीज यहाँ देखिए आप, यू आर सेइंग दैट मैं आपको इस चीज की ना लीड कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना है यहाँ पर, अभी आपको समझ आएगा कि क्या एक्चुअली हो रहा है यहाँ पर. अब इस W को देखिए आप, इस W के बारे में क्या जानते हैं आप? वी नो दैट दिस W इट्स अ नेबरहुड ऑफ X, so that means इस W में दो प्रॉपर्टीज है, W is open and W contains X as an element. Now W is open and it contains X as an element, so therefore it means X is an interior point of W. तो फिर क्या होगा? There will be an open sphere centered at X with some radius, and the open sphere will be contained in W. Why? Because W is open and X is an element of W. So W जो है ना, it contains X as an interior point, because every point of an open set is an interior point. Now X is a point of W, so it means it must be an interior point. It's an interior point means there must be an open sphere. There must be an open sphere means there must be a radius. अगर open sphere है तो कोई radius भी होगा ना. Let's suppose the radius is delta. मैं वही लिखने जा रहा हूँ. Since X belongs to W and W is open, comma, it follows we can find a delta positive such that the open sphere with radius delta center X is contained in W. You can do this. Now अब इसे देखें. Now अब देखिए इसे f of s delta x, आपको डायरेक्ट इमेज फंक्शन को किस पर अप्लाई करना है? ऑन डायरेक्ट इमेज फंक्शन एसोसिएटेड विद f, उसको आप अप्लाई करिए ऑन दिस s delta x, मतलब ऑन दिस ओपन स्फीयर whose center is x and whose radius is delta. अब ये आप करने के लिए आपको क्या करना है? You have to actually compute f at each point of this open sphere, and then you have to collect all the images. The set of images will be this set. But हमें ये भी पता है यहाँ पर that this set is contained in W. So therefore this will be contained in f of W. Do you agree with this? Yes, sir. Because f of a direct image function evaluated at A is actually the set of images of elements of A. So this will be the set of images of S delta X. Now S delta X is contained in W. So therefore the set of images of elements of S delta X under mapping F, it will be contained in the set of images of W under the mapping F. So that means this is contained in this. Now what is FW? This is contained in S Direct image. epsilon. हमें ये भी पता है ना, FW is contained in S epsilon F of X. Yes, sir.
नाउ अब इसे देखिए, सॉरी नॉट नाउ, नाउ हमने ऑलरेडी लिखा, इस तरह से लिखिए 10 डिस्टेंस बिटवीन, ये ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन x comma u less than delta implies the distance between f of x and f of u is less than epsilon. अब ये कैसे, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, मैंने जो लिखा ना I'll elaborate, ये कैसे मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ कि this distance less than delta implies this distance will be less than epsilon. अब ये कैसे होगा वो आप देखिए. अगर ऐसा है, if distance between x and u, if this distance is less than delta, it means then this point u, it must be in the open sphere centered at x and radius delta. होगा ना फिर ये, अगर distance is less than delta, so this point u must be in this open sphere. Now if this is an open sphere, so that means f of u, it must be in f of s delta x. Why? Because यहाँ आप कह रहे हैं u is an element of this set and this is actually the set of images of all the elements of s delta x. Since f of u is also an image of an element in s delta x, so therefore it must be an element of this. So f of u is an element of this. Now this f of s delta x, आपको पता है कि that it is contained in s epsilon f of x. This set is contained in s epsilon f of x. So that means you are saying that f of u belongs to this open sphere. Now f of u belongs to this open sphere means, it means the distance between f of u and the center of this open sphere, which is f of x, it must be this distance, it must be strictly less than the radius. What is the radius in this case? The radius is epsilon. So it must be strictly less than epsilon. हमने assume किया था u is in the open sphere, या actually हमने ये assume किया था distance between x and u is less than delta, and from this you can prove that the distance between f of x and f of u must be less than epsilon. Epsilon. So this has been justified. ये जो मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ ना, this has been justified. If this distance is less than delta, it implies that this distance is less than epsilon. अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे, hence हमने अब ये प्रूव किया एक्चुअली. अगर आप इस पूरी चीज को ना समराइज करेंगे, आप देखिए ऊपर जाइए, आप जहाँ से ये रिमार्क स्टार्ट हुई थी. स्टार्टिंग में हमने एक एप्सिलॉन लिया था जो चोजन आर्बिट्री. सो एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने आपको फिर दिखाया कि दैट देयर इज अ डेल्टा, वी कैन फाइंड अ डेल्टा पॉजिटिव. सो दैट मींस गिवन एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, एप्सिलॉन हमने आर्बिट्रली पिक किया था एंड ड्यूरिंग द कोर्स हमने एक डेल्टा भी फाइंड किया फिर. सो दैट मींस हमने यही दिखाया फिर, गिवन एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव. मैं इस चीज को पूरी चीज को अब समराइज कर रहा हूँ. इसमें एसेंशियली हमने ये दिखाया, गिवन एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, there is a delta positive, there is a delta positive such that this thing happens. Distance between f of x and f of y, it will be strictly less than epsilon whenever the distance between x and u is less than delta. ये जो आपने देखा ना, इसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ. Hence we have proved that given any epsilon positive, there exists a delta positive such that the distance between f of x and f of u, it will be strictly less than epsilon whenever
because हमने देखा when this is less than delta, this is, in that case, this is less than epsilon. This less than delta implies this less than epsilon. So उसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ. This distance will be less than epsilon whenever, जब भी, the distance between x and u is less than delta. और अगर आप इसे देखेंगे ना, this is precisely the epsilon delta definition of continuity at x. In fact, it's the generalization जो आपने वहाँ real analysis में जो definition देखी होगी ना, epsilon delta definition. आप by the way मुझे बता सकते हैं what is the epsilon delta definition for a real valued function of a real variable to be continuous? The definition is this: given any epsilon positive, there should be a delta positive such that The positive such that mode of expansion. exactly. वहाँ जो हमें definition पता है ना, वो ये है, given any, जो आपने BSc में सीखी होगी, given any epsilon positive, there exists a delta positive such that the modulus of fx minus fu is less than epsilon whenever mod of x minus u is less than delta. अब ये जो है ना mod को, we know that mod is actually the distance. So अगर आप इसको in terms of distance लिखेंगे, it will be this. It will be d of f of x comma f of u less than epsilon whenever, this is also distance between x and u in the usual metric, whenever d of x comma u is less than delta. और this is precisely the same जो हमें यहाँ obtain करी. Yes, sir. समझ रहे हैं मेरी बात? So that Yes, sir. means ये जो हमने जो क्राइटेरिया, आप देखिए हमने रिमार्क में कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने रिमार्क में assume किया था suppose f is continuous at x. That means मैंने आपसे कहा था कि suppose ये हो रहा है, because for f to be continuous at x the criteria is this. Neighborhood of The criteria is this. और यहाँ से फिर essentially मैंने आपको दिखाया कि फिर अगर ऐसा हो रहा है, if that be the case, then this must be true. Then given any epsilon positive, there should be a delta positive such that this, yes. and this is the epsilon delta definition of continuity. So therefore this definition, it leads to the Sir, can we leave, sir? Class हाँ है चाहिए हमारी. चाहिए, शायद वही आपके टीचर ही फोन कर रहा था, मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ. Okay, sir. Hello.